came here to explore and talk to you about like why your camera settings doesn't matter. But what an unexpected sunrise. Oh my god. Just check it out. So here are some of the photos that I took of this dope beautiful sunrise. So guys, this is one of the section of the forest that we have in our area. Me and my cousin used to come here a lot when we were kids to like catch crabs. This place has changed a lot since then, you know. I had to climb up from over there to like get the trail. So like a lot. So guys, I came here for two reasons. First, to explore this place like how it's looking right now, and second is to talk to you guys about why camera settings doesn't matter. Because every time I upload a portrait photography video, everyone just goes into comment and like, what is the camera setting you are using? And believe me, it doesn't matter. ज़्यादातर टाइम मुझे लोग लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के बारे में पूछते हैं और लाइक उसमें ज़्यादा सेटिंग्स मैटर करता है, लेकिन सेम सेटिंग्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उससे आप सेम शॉट नहीं ले सकते दो रीजंस की वजह से। पहला कि जो एक्सपोजर है मेरे इन्वायरमेंट में, मेरी प्लेस पर, वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से मैंने डिफरेंट शटर स्पीड यूज़ किया हूँ। और सेकेंड थिंग कि जो व्हीकल्स जिसकी वजह से वो लाइट ट्रेस क्रिएट हो रहे हैं मेरे फोटोज़ में, या फिर जो वाटर फ्लो है जिसकी वजह से वो जो वाटरफॉल का जो वाटर है वो सिल्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सब चीज़ मेरे यहाँ पर डिफरेंट है और आपकी जगह पर डिफरेंट होगी। तो अगर मैं आपको सेम सेटिंग मेरे फ़ोटो की बता देता हूँ तो उससे भी आप सेम फ़ोटो नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो जो मूवमेंट है और जो एक्सपोजर है आपकी प्लेस पर वो डिफरेंट है। मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको बस जो एक लाइक स्टार्टिंग सेटिंग है कि यहाँ पर ये एक्सपोजर पर या फिर ये से शटर स्पीड पर आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। यहाँ से आपको अपना लाइक आगे चलाना है, अलग अलग शटर स्पीड यूज़ करके देखना है कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और कोई एक सेटिंग्स पर जब आपको सही लगे वो आपको यूज़ करना है। I mean, photographers do a lot of hard work to capture a certain shot, like hiking with carrying all that camera gear. Not only landscape photographers but also wedding photographers or portrait photographers who like plan their shots and like scout the location before they are like even shooting the portraits or like landscape. So like they do a lot of hard work and planning to get a certain shot. So please, when they post those photos, please stop asking about the camera they are using or the camera settings they are using and start appreciating the hard work that he has done to get that certain shot. This place has changed a lot since then, guys. I don't have any videos or photos to show you guys, but believe me, this is not where I used to come. So I was hoping some mist over here to capture this, nature environment, but nah, it's all clear over here. So guys, there is one dog barking way too loud. I freaked out and stopped for like a minute. Now it is stopped. I don't know how these dogs come up till here. Now let's get back to our topic. So some of the best photographs that I've taken in my entire photography career were shot on phone, and I don't even remember what setting I've used in those shots. And you know what? I didn't even use the manual mode. I was just shooting on the auto on the camera app. So everything that matters is what you are shooting and how you are shooting. So stop asking other photographers what settings they are using for their work, because it really doesn't matter. Second photography settings जो मुझे ज़्यादातर लोग पूछते हैं वो है portrait photography settings. अब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी सेटिंग्स में क्या हार्ड है मुझे समझ में नहीं आता,
मतलब आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आपको अपर्चर एकदम लो रखना है, और फिर उसके बाद जो लाइक एक्सपोजर रहेगा वो शटर स्पीड से ठीक करना है, या फिर अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा मूव कर रहा है तो आपको बस हायर शटर स्पीड रखना पड़ेगी। और डे लाइट में अगर आप f1.8 ये सब यूज़ कर रहे हो तो आपको आसानी से 1/1000 तक आप शटर स्पीड लेकर जा सकते हो, जिससे आपका फ़ोटो एकदम शार्प आता है। फिर भी सब कमेंट्स में रहकर सेटिंग्स पूछना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कैमरा एक लॉकर है और मैं जो सेटिंग्स बताऊंगा वो आप लोग एंटर कर दोगे तो आपको सेम शॉट्स मिल जाएगा। ओह क्या बात है। डिपेंड करता है कि क्या बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड अलग है, आपका जो प्लेस है वो अलग है, वहाँ का एक्सपोजर अलग है, वहाँ का लाइक पूरा जो इन्वायरमेंट है वो अलग है, वहाँ की लाइटिंग अलग है, तो आपको सेम शॉट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सेम सेटिंग्स का यूज़ करके। क्योंकि जो सेटिंग्स है वो एक टूल है जो फोटोग्राफ्स हम लोग क्रिएट करते हैं उसके लिए, ना कि वो लाइक सब कुछ है। ज़्यादातर चीज़ जो डिपेंड करती है वो ये है कि आप क्या शूट कर रहे हो, कैसे शूट कर रहे हो। तो रिमेंबर दैट। सो गाइज, आई थिंक इट इज़ टाइम दैट वी शुड गो डाउन एट आवर होम। सो वहाँ से लाइक पूरा माउंटेन चढ़ के मैं आया, एंड देन फिर हम लोग कहाँ गया, यहाँ से जाकर वहाँ से नीचे उतरेंगे। सो लेट्स गो। Main reason why I said camera settings doesn't matter is because if I can take a shot at shutter speed 1/200, I can also take that shot at 1/400, but I won't do that because I will have to increase the ISO and the image quality of the image will decrease. So that's why I won't shoot at certain settings. So you get it right, like we can take a shot at any settings we want, we just adjust it according to what we want. So I think it is time to end this video. I hope you guys liked me talking about why camera settings doesn't matter, and I see a lot of you guys want me to make more videos, but right now it's very hard to like go from one place to another because of all the COVID situation. So that's why I'm not able to make like more videos or 2 videos in a week. I'm struggling to even make one video in 1 week. So that's the situation. But as soon as I will get to travel some places, I will start making the videos. Till then I will make videos over here. Some interesting videos are coming, so I think you should subscribe if you are new, and like this video if you are like subscriber or something. So see you guys in the next video. Peace out.